Good morning, everybody. On behalf of Functional and Female Urology subsection of Urology Society of India, it gives me great pleasure to welcome all of you to the first ever Zoom webinar on public education and awareness. We decided to start off with multiple sclerosis and its impact on urinary tract for a reason. And that is because the month of May is celebrated as a month dedicated to multiple sclerosis worldwide. And we thought we couldn't have a better opportunity than this. I'm extremely grateful to the office bearers of Multiple Sclerosis Society Mumbai chapter, and in particular, the founder president of MS Society in the entire country, Mrs. Sheila Chitnis, for agreeing to be a part of this initiative and hold our hands in this joint movement. I'm extremely grateful to Team IPCA for agreeing to be the support team for anything and everything that we could need. So on behalf of all of us, I'm officially thanking Suruchi, who's leading the marketing department of Team IPCA. Thank you so much. May I now invite Dr. Sanjay Sinha, who's the chairman of Functional and Female Urology subsection, to say a few words. Over to you, Sanjay. Thank you so much, Anita, and good morning to everybody. Sheila ji from Mumbai and all our participants, urologists, our patient activists, patients, family members. So wonderful to see all of you here for this session. The Urology Society of India last year decided to create sections to address better the needs of our community. And one of the sections that it created was the functional urology section, which includes the management of conditions such as multiple sclerosis. And we decided straight at the outset that we must have a public education arm. And so we created a team of very able urologists and very enthusiastic urologists led by Dr. Anita Patel from Mumbai. This is our first session, so a very inaugural session which you are a part of. And as I was telling Sheila ji, that we are very late into this game because you all as patients and activists have actually been working in this field for many, many years. And perhaps we can learn a lot from you as to how we can reach out to the community. But I hope that over the next few years, we can take this forward together so that we can help the community, our patients, their family members to improve the quality of their lives. Thank you very, very much. And I wish all the best for this program. Over to you, Anita. Thank you so much, Sanjay. Those were wise words. Sheila ji, may I request you to say a few words on behalf of all the Multiple Sclerosis Society chapters across the country. Over to you, Sheila ji. Okay. Thank you, Dr. Anita. Namaste. All the persons who have joined this webinar to observe World MS Day, as Dr. Anita has already said, that this is the whole month we are using for maximum of MS awareness on all platforms, and wherever we can reach to patients and to show them support, solidarity for all the MS patients all over, wherever they are. So thank you very much. And this is very good beginning from Mumbai. This is the first event. And as yours is also first, I'm so glad, Dr. Anita, this will be very useful in the long run. So it is recorded. I'm glad about that also. And as you know, the MS incontinence is the biggest problem. The first most invisible symptom. Nobody understands them, and they suffer. And as you know, their public toilets are not available. So unnecessarily, their life becomes very restricted. Social life is very limited. And this is what we want to improve. And those who are using now diapers, that is also not very safe, because continuously using diapers, again, they get UTI. So over to Anita for explaining how to deal with all these problems. I'm sure that there will be solutions forever. I mean, continuously using, because on and off they get they need these drugs, like antibiotics. So they should not. To avoid this, what are the solutions? These are most important.
Thank you very much once again, and hope everybody is finding this very useful, this session, and to all, Dr. Sinha also, everyone, all your experts. My namaste. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sheilaji. Thank you so much. You have a very close view of multiple sclerosis patients because you've been working so closely with them all these years. And I hope that in the subsequent talks, every point that you spoke about will be explained in some detail by all our speakers. So without much ado, we start with the meeting. I just wish to make one announcement. I am aware that some MS patients may want to narrate an incident in their life or their coping mechanism or something special that they did which helped them deal with their urinary condition. And if they wish to speak up, may I just request them to liaise with the Multiple Sclerosis Society Mumbai chapter secretary Geeta. And Geeta is in contact with all the various MS groups. I have already discussed with Geeta regarding the same. So if a patient wishes to say a few things about his urinary condition, and if time permits, we will allow that person access to the mic. So I will request the host team to let a few patients speak. They have to be very, very brief and precise. So we start the session. We have three very able speakers, and there are speakers from across the country. Yes. The slides are very patient friendly, and whenever required, they will switch to nationally understood language, which is Hindi. So we start with the first speaker, Dr. Nikhil Khattar, who is a senior urologist from Delhi, and he's going to tell us about how multiple sclerosis as a disease impacts the urinary tract. Dr. Nikhil, can you share your slides? And I think all of us will stay mute while Nikhil shares his screen. Yes, Nikhil, the screen is all yours. Please share it. Yes, you can start, Nikhil. We can see the screen. Yes, ma'am. So first of all, thank you for allowing me to be a part of this first event that we are having. First time we are going to interact with patients in such a manner. And what I will be speaking on is the impact of multiple sclerosis on urinary bladder. One thing that I know after, as I can recollect, having seen some multiple sclerosis patients in our OPD, is that they are very, very intelligent lot, very intelligent people. And they are being affected by all this. So if by the end of this, कुछ भी वो मुझसे extra सीख सकें इससे, so it will be, I will be really glad. Multiple sclerosis is a degenerative disease of brain and spinal cord, and it affects the urinary bladder in around 3/4 of the cases. These are the nerves. Nerves all have a covering all around with some gaps in between. So what multiple sclerosis does is this covering called the myelin sheath gets degenerated, and it can, apart from all other things that it can do, weaknesses of limbs, chalne mein pareshani, constipation and all. It can also have bladder problems causing urinary retention, yeah, urinary leakage. So first of all, before we can know any further कि abnormal क्या है, normally क्या होता है, थोड़ा सा मैं उस पे जाना चाहूंगा कि to store urine and to pass urine, ये दोनों बिल्कुल contradictory functions हैं हमारे ब्लैडर के. अगर हम देखें तो ब्लैडर का जब फिलिंग फेज होता है, जब ब्लैडर भर रहा है, तो ब्लैडर की मसल, ये डोंट गो ऑन दीज, ये जितनी भी साइंटिफिक टर्म्स हैं, जस्ट फिगर्स को देखिए कि ब्लैडर भरता है तो इसका नीचे एक स्फिंक्टर या एग्जिट गेट आप मान लीजिए, द्वारपाल मान लीजिए, ये बंद है, ब्लैडर से यूरिन को बाहर नहीं निकलने दे रहा. ब्लैडर भरता जाता है,
फिर ब्लैडर सॉर्ट ऑफ दस्तक देता है माइंड को कि मेरा इतना अभी भर गया है, अभी वॉइडिंग के लिए जाना है, यूरिन करने के लिए जाना है। तो जब यूरिन करने का फेज होता है तब ये एग्जिट गेट खुल जाता है, माइंड सिग्नल देता है, एग्जिट गेट खुल जाता है, और तब फिर ब्लैडर ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, दबाता है चारों तरफ से और यूरिन को निकालता है। जैसे ही यूरिन का निकलना पूरा हो जाता है तब वापस वो द्वारपाल अपनी जगह पे वापस उसको टाइट कर लेता है। और ये जो ये कंट्रोल वाला स्विच है, ये हमारी लाइफ साइकिल में चेंज होता है, हर समय यहाँ ही नहीं होता माइंड के साथ। अगर मैं थोड़ा सा और इसके डिटेल में ले जाऊं आपको, तो जैसे अगर ये ब्लैडर भर रहा है और ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, जब ब्लैडर के भरने के सिग्नल्स प्रेशर की वजह से यहाँ से होके ट्रेवल करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, और बचपन में क्या होता है कि माइंड तक कुछ सिग्नल नहीं जाता जब हम बिल्कुल बच्चे होते हैं, यहीं से सिग्नल वापस आके हमारे इसको कंट्रोल करता है। जैसे ये थोड़ा ज्यादा भर जाता है और वो उसको खोल देता है और बच्चों को यूरिन हो जाती है, नैपी गीली हो जाती है। कुछ समय के बाद जब हमारी मम्मियां हमको बताती हैं कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट प्लेस, नॉट द राइट टाइम, अभी यूरिन नहीं करना है, धीरे धीरे हमारा माइंड ट्रेन होता है, तब फिर ये सारा सिग्नल धीरे धीरे हमारे ऊपर ब्रेन में एक जगह होती है जिसका ये नाम है, उसका कोई जरूरत नहीं है जानने की, बट यहाँ से इसका कंट्रोल फिर संचालित होने लगता है। और जब तक फिर एडिक्वेट जगह नहीं होती, अप्रोप्रिएट जगह नहीं होती, तब तक ये माइंड हमारा सिग्नल यहाँ पे इस एग्जिट गेट को ये सिग्नल देता है, रेड सिग्नल दिए रहता है, नहीं भाई अभी खुलना नहीं, अभी यूरिन पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भरने का टाइम है, हम सोशली उस जगह पर नहीं है जहां पर यूरिन कर सकें। और जब फिर ऐसी जगह पे हम पहुंच जाते हैं कि यूरिन कर सकें, तब ये कंट्रोल हट जाता है और फिर ये पास हो जाता है। तो इस तरीके से ऑन एंड ऑफ हम कर सकते हैं। तो जब तक स्टोरेज फेज है, यानी कि भरने और भरना का समय है, एट एवरी टाइम हमारी किडनीज जो है एक एक ड्रॉप ब्लैडर के अंदर डालती जा रही हैं। हमको पता पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन एक एक ड्रॉप करके डालती जाती हैं। तो इस समय में जरूरी क्या है कि हमारा एग्जिट गेट बंद रहे। एग्जिट गेट हम स्फिंक्टर्स को बोलते हैं, जो बंद रहे, ब्लैडर की कैपेसिटी अच्छी हो, इतना होना चाहिए कि 3-4 घंटे हमें 2 बार वॉशरूम विजिट के बीच में मिल जाएं। सेंसेशन ऑफ फुलनेस भी आनी चाहिए, बीच बीच में दस्तक देना चाहिए, नॉक करना चाहिए हमारे ब्लैडर को, ताकि हम भरते हुए ब्लैडर के साथ आसपास बाथरूम के पहुंच पाए जब जरूरत हो। और प्रेशर भी ब्लैडर में भरते हुए कम होना चाहिए कि ऊपर किडनीज तक, गुर्दे तक ये प्रेशर ना जाए। और खास तौर से खांसी, छींक जैसी जो भी हाई प्रेशर ब्लैडर वाली चीजें हैं, जिस समय एकदम मोमेंटरली बहुत हाई प्रेशर हो जाता है, तो हमारे स्फिंक्टर्स यानी एग्जिट गेट इतना टाइट होना चाहिए कि उस समय भी वो यूरिन को बाहर निकलने से बचा ले और हमें कोई एम्बैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े। इस समय हम जैसे सब लोग बैठे हुए हैं, अभी हम सब अपने अपने स्टोरेज फेज में। फिर दूसरा होता है एम्प्टिंग फेज। एम्प्टिंग फेज सिर्फ तभी होता है जब हम टॉयलेट में हैं, तब हम विल से अपना कंट्रोल स्विच कर सकते हैं और हम एग्जिट गेट सबसे पहले रिलैक्स होता है और उसके बाद ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर दैट विल रिजल्ट इन कंप्लीट एम्प्टिंग। ये एक नॉर्मल उसमें होता है। और आप देखो, अगर इसको वीडियो को मैं फिर से चलाता हूँ, तो कैसे जैसे जैसे एक गुब्बारे को नीचे से होली वाले गुब्बारे को नीचे से छोड़ दो तो कैसे चारों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करके वो खाली हो जाता है, जस्ट लाइक दैट द ब्लैडर एम्प्टीज। और इस एम्प्टिंग फेज में हम दिन भर का 1-1.5% समय गुजारते हैं, जो 8-10 बार बाथरूम जाते होंगे, 7-8 बार, उसमें सब मिलके भी 5-7 मिनट होता होगा। बाकी 23 आवर्स 55 मिनट्स हम स्टोरेज फेज में ही होते हैं। तो स्टोरेज फेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि कई जगह पे इस तरीके से स्कार्स बन जाते हैं, ब्रेन के अंदर भी और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी। और इनफैक्ट मैंने एक ये पढ़ा, कल मैं ऐसे ही देख रहा था, कितने ब्यूटीफुली उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जैसे एक जगह खरोंचने पे स्कार बन जाता है स्किन पे, इसी तरीके से बॉडी ऑटो इम्यून होके खुद ही के एक स्कार को खरोचती जा रही है ताकि वो धीरे 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 करके इसी तरह बढ़ता जा रहा है ना। अब इस सब का असर जो है
हमारे दोनों फेजेस पे होता है, ब्लैडर के दोनों फेजेस पर ये असर होता है। स्टोरेज फेज में असर होगा तो जब हमें स्टोर करना चाहिए यूरिन तो वो बार बार यूरिन की हाजत होगी या अर्ज होगी, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज वन प्रॉब्लम दैट कैन हैव। और फिर दूसरा, इतना जोर का यूरिन लगेगा कि बाथरूम की तरफ भागना होगा, अदरवाइज यूरिन लीक ना हो जाए कि डर से बाथरूम की ओर भागना हो, तो उसको अर्जेंसी बोलते हैं, या एक्चुअली यूरिन लीक हो जाए। ये सब स्टोरेज फेज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ब्लैडर में। फिर एम्प्टिंग फेज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि यूरिन करने के लिए गए और स्टार्ट ही नहीं हुआ, स्टार्ट होने में भी काफी प्रॉब्लम हुई, या यूरिन होना शुरू हुआ तो उसकी स्पीड कम हुई, या फिर ब्लैडर जितना भरा है खाली, हमने सोचा कि खाली हो गया लेकिन एट द एंड ऑफ मैच्योरेशन उसके अंदर पार्शली यूरिन बचा रह गया। तो ये दोनों तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें दो हाफ से बताया हुआ है। आधे में जब जब ब्लैडर को शांत रहना चाहिए स्टोरेज फेज के समय, उस समय ब्लैडर ओवर एक्टिव हो सकता है। जब ब्लैडर को खाली करने हम जा रहे हैं और उसको एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, उस समय वो अंडर एक्टिव हो सकता है। और जब खाली करने समय पे हमारे एग्जिट गेट को खुलना चाहिए तो उस समय वो बंद हो जाता है और ऊपर से ब्लैडर जोर लगा रहा होता है, तो जिसको डिसएनर्जी है, यानी कि सिनर्जी नहीं रही, दोनों में तालमेल खत्म हो गया। तो कई पेशेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा ब्लैडर खाली हो गया, लेकिन कई बार वो खाली नहीं होता। हाफ ऑफ देम हु थिंक दैट दे हैव एम्प्टीड द ब्लैडर फुल्ली मे बी रॉन्ग इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और हम लोगों को बड़ा शौक होता है एज यूरोलॉजिस्ट ये पता करने का कि ब्लैडर के अंदर क्या रह गया। तो हम आपको कहते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड कराइए, फिर आप यूरिन करिए, और फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड हम करा के देखते हैं ताकि हमें पता पड़ जाए कि आपके ब्लैडर में क्या बाकी है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहीं से सारा कुछ अभी आगे बाकी दोनों लेक्चर्स में आपको पता पड़ेगा कि यहीं से सारा कुछ शुरू होता है कि हम किस तरफ का ट्रीटमेंट दें, क्या क्या आपका ठीक करें, स्टोरेज ठीक करें कि एम्प्टिंग ठीक करें, या दोनों पे काम करें। और इस सब के साथ बाकी जो कुछ और चीजें हैं जो पूरी प्रॉब्लम को ऐड करती हैं, ये जो स्फिंक्टर, जो हमारा यूरिन का स्फिंक्टर है, यही पीछे जाके लैट्रिन का स्फिंक्टर भी बनता है, और इसके गड़बड़ होने से कॉन्स्टिपेशन भी बहुत होता है। तो कॉन्स्टिपेशन कई पेशेंट्स को एक्सपीरियंस होता है। दूसरा, हाथ के मूवमेंट अगर गड़बड़ हो, कई पेशेंट्स अपना खुद ही ट्यूब पास करके यूरिन पास करना पड़ता है। तो अगर हाथ ठीक से फंक्शन में नहीं हो, डेक्सटेरिटी नहीं है, तो ये ट्यूब डालना भी मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को व्हील चेयर पे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी और परेशानी होती है, विच एड्स अप टू द प्रॉब्लम। एंड देन द other two speakers will speak more on this. Multiple sclerosis affects everyone differently. किसमें क्या होगा ये पता नहीं, कोई एक तरीके से स्कार नहीं है, किसी का कहीं है, किसी का कहीं है, and so everybody has a different journey and everybody has to deal with it in a different manner. Thank you so much. Thank you so much, Nikhil. That was a wonderful talk, giving really an overview of how MS impacts urinary bladder. Can you stop sharing your screen, please, Nikhil? Lovely. Thank you so much. So now that we all know how multiple sclerosis affects the urinary system, we need to know, once you have experienced urinary symptoms, how do we diagnose what exactly is the problem so that correct solution can be reached? To tell us about that, may I request Dr. Shruti. Dr. Shruti Pandit is a urologist currently at Aurangabad, and Shruti is going to give us an overview of how the patient of multiple sclerosis with urinary problems can be investigated. Shruti, can you share your screen? Thank you so much, Shruti. Over to you. गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया कि यूरिनरी सिम्टम्स के लक्षण जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, वो कई तरीके के हो सकते हैं। स्टोरेज है, वॉइडिंग है, कई तरीके के हो सकते हैं। तो हम एज यूरोलॉजिस्ट, हमें एक गाइड मैप चाहिए, आपके सिम्टम्स किस तरीके का है, ताकि हम सही से उसका इलाज कर सके। इसलिए आज मैं डॉक्टर श्रुति पंडित कृपलानी आपको ये गाइड मैप या इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताऊंगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कब की जाती है, किन में की जाती है और कैसे करते हैं। ये सबसे पहले आप सवाल पूछोगे कि ये क्यों करें हम इन्वेस्टिगेशन, हमें ऑलरेडी और बहुत सारे तकलीफ है, चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, इसमें ये यूरिन का एंगल क्यों ला रहे हैं।
अभी जो किडनी एंड यूरिन सिस्टम है हमारे शरीर का, वो बिल्कुल एक पाइपलाइन जैसा है जो हमारे घर से निकलता है। अब सोचिए ये पाइपलाइन में पानी जमा हो जाए, कचरा जमा हो जाए तो क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी, ओवरफ्लो होगा। ये देख के गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप सोचिए यही चीज हमारे किडनी के अंदर होती है। इसके वजह से किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में स्टोन हो सकता है और सिवियर केसेस में किडनी फेल भी हो सकता है। इसलिए ये जांचें करना बहुत जरूरी है। और अगर ये रीजन काफी नहीं था तो लिटरेचर में लिखा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स को सबसे कॉमन कॉज होता है हॉस्पिटल में एडमिट होने का, वो है यूरिन के प्रॉब्लम्स की वजह से। इसीलिए हर पेशेंट में कुछ बेसिक यूरिन के इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। ये कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है? सबसे पहले हम जानना चाहते हैं एज आपके डॉक्टर कि आपको घर में एग्जैक्टली क्या तकलीफ होती है बाथरूम के रिलेटेड। क्या आप बार बार जा रहे हैं? आप कितना यूरिन कर रहे हैं एक बार जाके? अब लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है? और इसकी वजह से आपकी कितना लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ये चीजें जानने के लिए हमारे पास 2 टूल्स है। सबसे पहले है ब्लैडर डायरी। ये आपको एक या तो पेपर पे या तो ऑनलाइन दिया जाता है। इसमें आपको भरना है कितने टाइम को आपने कितना यूरिन पास किया है, क्वांटिटी, लीक हुआ या नहीं हुआ, दर्द हुआ या नहीं हुआ, और क्या आपको बहुत अर्जेंट यूरिन आया। इसके अलावा आपको ये भी डॉक्यूमेंट करना है कि आप दिन में कितना पानी पी रहे हो, कितने कप्स, कितने ग्लासेस, कितना चाय, कॉफी, जूस, सब कुछ आप जो घर में कर रहे हो वो चीज का हमें एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ये एक बहुत आसान चीज है जो आपको थोड़ा ध्यान से घर में करना है और इससे आपके डॉक्टर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। दूसरा टूल है, आपको एक क्वेश्चनर दिया जाएगा, एक पेपर दिया जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, वो क्वेश्चंस आपको भरने हैं। ये हम क्यों करते हैं? जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया कि एक हाथ की कोई भी 2 उंगली एक जैसे नहीं होती है, वैसे ही हर पेशेंट अलग होता है। कुछ पेशेंट जो काम पे जाते हैं उनको लीक का बहुत प्रॉब्लम रहता है, उनको लीक बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कुछ पेशेंट जो व्हीलचेयर में है, जो चल फिर नहीं पाते हैं, उनमें बार बार बाथरूम जाना नहीं होता है तो हम उस चीज पे ध्यान देते हैं। तो एग्जैक्टली आपको आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज का, वो समझने के लिए हम ये क्वेश्चनर आपसे भरवाते हैं। एज अ रूटीन हर पेशेंट का एक यूरिन टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि इन्फेक्शन है या नहीं। अगर कुछ इन्फेक्शन आता है तो हम यूरिन कल्चर करते हैं। यूरिन कल्चर में ये पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हो रहा है और वो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए कौन सी दवाइयां काम करेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कल्चर का रिपोर्ट आने में 3 से 5 दिन लग सकते हैं। ये सबसे जरूरी है, जब डॉक्टर आपको एक डिब्बी देंगे और बोलेंगे यूरिन का सैंपल हमें दे दीजिए कल्चर के लिए, तो आप कैसे सैंपल कलेक्ट करना है? सबसे पहले आपको हाथ धोने हैं साबुन और पानी से। फिर या तो आपको कोई वाइप दिया जाएगा या तो आप पानी से भी आपके यूरिन के एरिया को अच्छे से साफ करना है। लेडीज को आगे से पीछे साफ करना है और जेंट्स को स्किन नीचे खींच के पूरी वो जगह साफ करनी है। उसके बाद कुछ 20, 30 या 50 ml थोड़ा यूरिन फ्लो होने देना है, जाने देना है, और जो बीच में जो यूरिन आती है वो पकड़ना है। जब आप यूरिन कर रहे हो वो कप में, तो ये चीज का जरूर ध्यान रखिए कि वो जो कप का टिप है वो आपकी स्किन को टच ना हो, नहीं तो वो स्किन के ऑर्गेनिजम्स आते हैं और यूरिन कल्चर रिपोर्ट गलत आ सकती है। जैसे डॉक्टर निखिल ने ऑलरेडी बताया, सोनोग्राफी एक बहुत जरूरी जांच है, हर पेशेंट में हम करते हैं, की जाती है देखने के लिए क्या क्या किडनी में स्टोन है या ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में कोई सूजन है, और जैसे उन्होंने बताया यूरिन करने के बाद कितना यूरिन अंदर बच रहा है, उसको रेसिड्यूल यूरिन बोलते हैं। ये देखने के लिए आपको एज अ पेशेंट क्या इंस्ट्रक्शंस ध्यान में रखना चाहिए जब आप सोनोग्राफी के लिए जाएंगे। सबसे पहले आपको जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पी के, जब अर्जेंट यूरिन आ रहा हो तभी स्कैन के लिए जाना है, और जब तक ब्लैडर पूरा भरा ना हो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी सही तरीके से। सोनोग्राफी के वक्त डॉक्टर आपको थोड़ा करवट लेटने को बताएंगे या लंबी सांस लेने को बताएंगे। ये होता है किडनी देखने के लिए, तो ये आपको सही तरीके से करना है। और आपको डॉक्टर बताएंगे कि यूरिन पूरा खाली करके फिर वापस आओ सोनोग्राफी के लिए, तो आपको पूरी अटेम्प्ट करनी है कि जितना हो सके उतना पूरा यूरिन खाली करना है। एक जांच होती है फ्लोमेट्री।
इसमें जो मरीज है वो एक मशीन पे यूरिन करते हैं और वो यूरिन के कुछ डिटेल्स हमें अपने कंप्यूटर में मिलते हैं एक ग्राफ के जरिए में। हमें पता चलता है क्या स्पीड से यूरिन आ रही है, कितना टाइम लग रहा है और कितनी वॉल्यूम ऑफ यूरिन आ रही है। हर पेशेंट में एक बेसिक ब्लड टेस्ट होता है किडनी फंक्शन देखने के लिए और इन्फेक्शन है या नहीं वो देखने के लिए। अब तक की जो मैंने जांच बताई वो हर पेशेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। अभी कोई ऐसी खास जांचें है जो सिर्फ कोई स्पेशल पेशेंट्स में हम यूज करते हैं जब हमें कोई और इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। ये कौन सी जांचें है? सबसे पहले है यूरोडायनामिक टेस्ट। ये क्या होती है? अभी हम सबको पता है ईसीजी हार्ट की एक पट्टी निकलती है, उसी तरीके से ब्लैडर की एक पट्टी निकलती है, ब्लैडर का ईसीजी, उसको बोलते हैं हम यूरोडायनामिक टेस्ट। ये टेस्ट तब किया जाता है जब हम दवाई दे रहे हैं उसका असर नहीं हो रहा है या तो हम कोई ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं। इसमें आपके यूरिन की जगह पे और लैट्रिन की जगह पे दो बहुत छोटी नलियां डाल दी जाती है और वो नली हम एक कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं जिसमें हमें ब्लैडर की या पेशाब की थैली का प्रेशर मालूम पड़ता है। दूसरी जांच है स्कोपी या सिस्टोस्कोपी। इसमें हम एक दूरबीन डालते हैं और ब्लैडर का अंदर का हिस्सा की जांच करते हैं। ये हम तब करते हैं जब आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपके ब्लैडर में कोई स्टोन है या तो फिर कभी कभी अगर हम थोड़ा सा कैंसर का डाउट आता है तो भी ये जांच कर सकते हैं। और फाइनली एक एक्सरे टेस्ट भी कुछ पेशेंट्स में की जाती है। उसमें हम एक इंजेक्शन डालते हैं पेशाब की थैली में और एक्सरे लिया जाता है ताकि हम अंदर का भाग और किडनी देख सके। तो अंत में 100 बात की एक बात यह है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के कई अंगों को इफेक्ट करती है और हम उसी पे ध्यान देते हैं जो हमें दिखता है, जैसे चलने फिरने में दिक्कत। लेकिन एक आइसबर्ग के जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस शरीर के अंदरूनी हिस्से को भी काफी खतरनाक तरीके से इफेक्ट करता है। इसी तरीके से किडनी के संबंधित जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लक्षण है उसको समझ के उसका सही तरीके से जांच होनी चाहिए। Thank you so much, Dr. Shruti, for such a lucid presentation. And you made it so easy for everybody with your fluent Hindi. Some of the patients who may not be very fluent in Hindi may not have understood parts of the spoken language, but the slides were self-explanatory. So thank you so much. We move over to the next presentation, and which is by Dr. Sujit Jose. He's from Kerala, a consultant urologist, and Sujit will be telling us about how do we manage these patients? What can we do to improve the urological quality of life of multiple sclerosis patients? Over to you, Sujit. We can see your slides clearly. Okay, thank you. Thank you everyone for giving me this great opportunity. My previous speakers have already mentioned, one second. Is the slide audible? Can you see the slides? Yes, we can, Sujit, go ahead. Okay. And you are audible as well. Yes. Okay, fine, thank you. My previous speakers has beautifully described how multiple sclerosis disease affect the urinary system and the ways how to evaluate it. Now, let me tell you something about the management things that we can do. First, I will like to recommend use the lifestyle changes, that is to restrict the amount of fluid that you take to about 1.5 to 2 liters per day. And the fluid restriction after dinner is also important. One thing to be noted is that when you restrict the amount of fluid you take, you should be careful to avoid dehydration because it will exacerbate constipation and it will again increase the urinary symptoms. And another dietary advice that is given is to restrict the intake of caffeine. By restricting caffeine, it doesn't mean only to restrict the number of coffees we take, but according to the current dietary habits we have, we should also think about the other forms of caffeines that are available, like cold coffees, shakes, coffee biscuits, all those things. We should consider these things also while restricting the caffeine. And we should tell no to alcohol and smoking, which will decreases the bladder symptoms a lot. And another thing that we can do is timed voiding. Timed voiding means training your bladder to empty at fixed intervals.
In this time when we have many gadgets like smartphones and smart watches, it is actually easy to practice the timed voiding, because there will be many applications in which we can set timely alarm and to void at that time. This timed voiding will help a lot in preventing the incontinence and other urinary symptoms. Other bladder training things are delayed voiding, double voiding, and incremental voiding schedule. That is, the time to voiding, the interval between two voiding, we can increase gradually. And bladder control strategies. And two of these are urge suppression and urge control technique. How to do it is that when you have a sudden urge to go to bathroom, you should not go to bathroom at that time. You should remain calm, contract your, and once the urge wave settles, then it's the best time to go to bathroom. In this way, when you suppress the urge, you can somehow control your storage symptoms. And another thing you can do is pelvic floor physiotherapy. It will improve your urinary symptoms and thereby your quality of life. Whenever you are going to do a pelvic floor physiotherapy, always do it with biofeedback. It is always better. Biofeedback means whenever you are, some electrodes will be connected to your perianal region, and whenever you are contracting the muscles, you will see that visual analog of that in your screen, so that you will be confident that you are contracting the contracting or relaxing the correct muscle. So physiotherapy, pelvic floor physiotherapy with biofeedback will make a change than doing physiotherapy without biofeedback. And now to coming about the medication, telling about the medications, there are two groups of drugs, and all these drugs will act by, they will sedate your bladder. It is the way how these drugs act. Once they sedate your bladder, then you will be free bladder storage symptoms. But when you are taking these drugs, you should be aware of the side effects of these drugs also. The main side effects of these drugs are constipation, dry mouth, and headache. So if you are facing any of these problems while taking these medicines, you should consult your urologist and find a solution for it. Now, I will tell about some ways to manage the incontinence associated with the storage bladder symptoms. As you are aware that mostly the diapers which are available in our area maybe comes under either these two categories. Either there may be a pull-up pants or it may be a stick-on diapers. And the problem with these diapers is that it's actually used for both urinary and fecal leak. So it's little bulky and it is little costly also. And since it is bulky, it is difficult to conceal, and it can produce a feeling of embarrassment or insecurity for people when they use it in public toilets and all. So I like to introduce you the other forms of incontinence pads. Like there are, apart from diapers, there are some incontinence pads which are available. Though it is not as common as in the Western population in our country, but still it is available. It may not be available in the medical store near to you, but it is available in the online platforms like Amazon and Flipkart. The advantage of this is that it has two surfaces. One is an absorbent surface, and the other surface is an adhesive surface. And that surface you can stick it to the inner surface of your underwear. So it is specific for urinary incontinence. And the better thing is that you can conceal it under your undergarments. So when you go to a public bathroom and all those things, you will not feel that embarrassment. Also, since it is smaller in size, for the same price, you will get more number of incontinence pads compared to adult diapers. If you have the urine leakage at your night, then you should think about these options like bed protectors. It can be either a reusable one or a disposable one, and it can protect your beds, linens, and everything from urine soakage, and it can increase your quality of life. Whenever you are dealing with the urinary symptoms you are having with multiple sclerosis, you should always think about the functional status, your functional status, and your functional impairment level, because it is seen that the people with urinary symptoms have increased the risk of orthopedic fractures and everything, not only for multiple sclerosis, all urinary symptoms. It may be due to the fact that they may go to bathroom, rush to bathroom at night and may fall down like that. So according to your functional level, you should equip your bedroom and bathroom with aids like what I have shown in this figure. In the bathroom, you can use the functional aids like this, or you can use a non-slip mat. And all these things should prevent you from having a fall and having orthopedic traumatic fracture or anything.
And while using these incontinence pads and everything, there may be urine stockage and it is an irritant to the skin. So you should be aware of the barrier creams that are available to protect your skin from damage. Most of the barrier creams contain a compound called zinc oxide, and it is actually a barrier to protect your skin. Now, sometimes you may not be, as Dr. Nikhil has already told, sometimes you may not be able to void by your own. In those cases, your doctor may recommend you to do other methods to empty your urine. One option is clean in self-intermittent catheterization. I will briefly show the technique of how it is done. For doing it, you need a catheter, a lubricant, a clean environment, and a method to evacuate the urine. And the first step is to wash your hands with soap and water and then dry it. Then you should wash your genital area. Then you should apply the lubricant at the tip of the catheter. You should apply the lubricant to adequate amount to prevent trauma. Then you should insert the catheter gently. You should insert the lubricated catheter gently. Then you should empty the urine completely. It should be emptied completely. Then you should remove the catheter and clean the area. And if you're planning to reuse the catheter, you should clean and store the catheter suitably. And if you're planning using a disposable catheter, you should dispose it properly. You should know that we are not doing it with a sterile gloves or anything. So it is not a sterile procedure. It is a clean procedure. And you need not to worry about it, because studies shows that even though this technique is time and cost effective, and there is no higher rate of infection with clean intermittent catheterization. And now about what type of catheter you can use. There are two types of catheters available across the world: hydrophilic catheter and Nelaton's catheter. Unfortunately, these hydrophilic catheters have very limited availability in India, and even if it is available, it is very expensive. So even though it has lower rate of urinary tract infection, trauma, and hematuria, unfortunately, it is not available in India. So we need to depend upon the other non-hydrophilic catheters, which like Nelaton's catheter. It is easily available in India, and it is not expensive. And about selecting the Nelaton's catheter, it is color coded. So different sizes are different colors. For our population, a 12 French or a 10 French catheter is good. And if your urethra is having any other problems which can decrease the caliber of your urethra, you may need to take a smaller size catheter. And another thing is storage of reusable catheter. If you're planning to reuse it again, ideally it is better to store it in a dry environment. In this figure, I am showing a method to store it in dry environment. You can make a pouch made up of washable cloth in the shape of your catheter and with a hook at the upper end. And you can hang it vertically over your windows or some areas. And you can make multiple pouches, like 3 or 4, so that timely you can wash it and reuse it. And while after using and washing the catheter, you should place the catheter inside it. And while placing, you should be careful that the eye of the catheter should be at the upper end, so that by the time it will be completely dry. So it is a good method to store your catheter in a dry environment. Now, if for some reasons, if you are having a permanent catheter in you, always stick on to suprapubic catheter, because if you are putting your catheter to your urethra, it has many other complications, and it is advisable to use a suprapubic catheter if you are planning for an indwelling catheter. Now, there are many other options to control the urinary symptoms in multiple sclerosis, and these these things are available in different parts of our country. And I like to take this opportunity to introduce you some of the treatment options. One option is injection of Botox into your bladder or your sphincter to keep them calm. So that if you have a lot of overactivity of your bladder, we can inject Botox into your bladder so that it will remain calm for some time, and you will be free of your symptoms. And if you have difficulty in voiding urine, you can inject Botox into your sphincter so that it will be relaxed, so the urine can come little more easily. But one disadvantage of this technique is that it has a single injection has a efficacy for a limited period, maximum for 9 months. So you need to repeat the injections.
And another thing is that there is a chance that some of the patients may go for urinary retention after this procedure. So before opting for this procedure, you should be well trained in clean intermittent catheterization. And another minimally invasive therapy is the percutaneous or transcutaneous tibial nerve stimulation. It is like that we will stimulate the nerve in your leg, and this stimulation of the nerves will modulate the nerves to your bladder, so that your blood it will make your bladder nerves to your bladder more disciplined, so your symptoms will be relieved. And another option is implanting a pacemaker of your bladder. Yeah, I have shown you the picture. It is like a pacemaker for your heart. It's like a pacemaker for your bladder. And through this pacemaker, we can modulate the nerves to your bladder, and it can sometimes relieve your symptoms. So, to summarize the treatment goals, our first priority will be always to preserve your kidney function, and second priority will be to minimize the complications, and the complications include stones, infections, urine leaks, and skin problem. And by minimizing these complications and everything, we can maximize your quality of life. And I thank you for this great opportunity. Remember that you are the hero of your own life story, and heroes never give up. Thank you. Thank you so much, Sujit, for that lovely talk and the inspirational line in the end. Thank you. Can you stop sharing your screen, Sujit? Lovely. Yes. So I open this this webinar for question and answer sessions. And as I can see, there are a lot of questions in the chat box. We do have a separate team of 3 urologists who are all ready to answer these questions. So I'm going to be asking the questions to you people. People answering the questions are Dr. Nasrin Geete from Maharashtra, Dr. Neeraj Kumar from Bareilly, and Dr. Soumya Iyer from Rajkot. So the first question is to Dr. Neeraj. Should we drink 4 liters of water? What if I drink only 1.5 liters of water? Which way is the right way? Yes, Neeraj, go ahead. Thank you for asking this question. It is a very, very relevant question regarding the intake of water. The requirement of water depends upon the conditions of the patient as well as the climatic conditions. So no one particular amount is a fixed amount. What we normally say is that an adequate amount of fluid. Now, what is that adequate amount? This is normally कि जितनी देर आप जगे हुए हैं, उतनी देर में आप 1 गिलास पानी पी लीजिए. तो इसका मतलब है कि अगर if you are awake for about 16 hours a day, you take at least 16 glasses of water. Now, this has to be titrated as कि किस टाइम पे पिए. Normally, multiple sclerosis और इन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि शाम को या रात में कम पानी पिए ताकि वो रात में उठना ना पड़े बार-बार. They don't have to get up repeatedly in the night. During the daytime, they can take more of fluids so that they can go to the toilet adequately. So no one amount of water is quantity of water is fixed. We have to titrate it and as to the best of our patient's condition and climatic conditions. Lovely. That was a very perfect answer. Now, the caveat here is that when a patient suffers from urinary incontinence, अभी urine control के मेरे issue है और मुझे constipation भी है. Constipation handle करने के लिए मुझे बहुत सारा पानी पीना है और urine control बहुत गड़बड़ हो जाती है अगर मैं 3 और 4 लीटर पानी पीने लगूं. तो वो मैं बैलेंस कैसे कर सकती हूँ? ऐसे कोई मेडिकेशंस है जो मुझे कॉन्स्टिपेशंस भी ना दे और यूरिन कंट्रोल भी मैं कर सकूं और पानी भी अच्छे से पी सकूं? पानी की जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली यूरिनरी से डायरेक्ट ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन की उतनी नहीं है. तो अगर कॉन्स्टिपेशन एक प्रॉब्लम है तो वी कैन यूज इट अदर मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट आल्सो लाइक हाई फाइबर डाइट्स, other laxatives if we have a constipation taken into care. But urinary problem has a direct correlation. Urinary intake has water intake has a direct correlation with the amount of urine that we produce, and that is more of a problem. So we have to titrate more of water intake in relation to the urinary problem. Constipation के लिए हम दूसरी तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो भी सही रहेगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी. Yeah, very true. You have already answered the question which has just arrived
that if I drink too much, I go 40 times to pass urine, and if I don't, then I get constipation. And I think striking the right balance between the two is the way forward. Next question, and I would give that to Dr. Nasreen. And that is, I'm already wearing a diaper. Dr. Nasreen. Nasreen is from Mumbai, Maharashtra. I'm already wearing a diaper. However, India is a hot country and wearing a diaper is an issue. I get rashes and I don't want to wear a diaper day and night. मैं ये कैसे हैंडल करूं? दिन में क्या करूं, रात में क्या करूं, और डायपर कितनी फ्रीक्वेंटली बदलूं? बिकॉज डायपर पे साइज लिखा हुआ रहता है, एक डायपर में कितना मिलीलीटर पेशाब समाएगा वो कभी भी डायपर पे लिखा हुआ नहीं रहता है. The medium, small and large sizes refer not to the holding capacity, but to the size as it fits to the patient. So how do I manage all this, Dr. Nasreen? Yes, ma'am. So what I would suggest is, when at home, we can avoid wearing diapers, and at that time we can wear pads, which is already been mentioned by Dr. Sujit Bose, that we are having different gadgets like or different options. So I would suggest to wearing the pad is much more beneficial or much more convenient than wearing a diaper, especially when we are at home, because we know if the pad is full, we can change it, and we are having the pads available at home. So, but when we are going out, we are forced to use diapers because we cannot frequently have an access to the toilet to change the diapers or the pads. So then we can wear diapers when we are going out only, and not wearing the diapers when we are at home. And diapers जब भर जाता है, हमको महसूस होता है कि नहीं अब तो गीला हो गया है, तब चेंज करना है. There is nothing like कि अभी हमको यूरिन हो गया है तो अभी हमको चेंज करना है. थोड़ा सा यूरिन अगर लीक हो गया तो that's okay, we need not change the diapers, because cost भी उसमें ऐड करेगा. Every time you are going to change the diaper, it is adding to the cost आपकी मैनेजमेंट में. तो जब थोड़ा सा लीक हो गया that's okay, लेकिन आपको जब गीला महसूस हो रहा है डायपर, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा. तो अगर आप पूरे दिन में अगर मान लो आप बाहर हो पूरे दिन और आपको पूरे दिन में डायपर वेयर करना है, तो 2 से 3 डायपर शायद आपको लग जाएंगे. बट वही चीज आप जब घर पे हो तो आपको पैड यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा. और आप अगर बहुत ज्यादा वेट नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा लीक नहीं कर रहे हो, तो अवॉइड वियरिंग एनीथिंग. I mean that's also fine. Another thing is, आप जब बाथरूम जा रहे हो, आपको अर्जेंसी आती है, आपको स्लिप ना हो जाए, इसीलिए एंटी स्लिप मैट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, वो यूज करना है. और जब रात में आप सो रहे हो तो अवॉइड वेयरिंग एनीथिंग टू अवॉइड रैशेस एंड टू अवॉइड यूटीआईज, यूरिनरी इन्फेक्शंस. तो आप जो है वो एंटी वेटिंग जो है बेडशीट्स अवेलेबल होते हैं, जो बच्चों के लिए भी होते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं. Thank you so much, Dr. Nasreen. That was very clear. Next question is in 2 parts. One is regarding storing the catheter. Is it necessary that I use a new catheter every time? If I were to store the catheter, what are the multiple ways that I can do it? And I have seen many patients keeping a catheter dipped in a water bottle. Okay, it is filled either with Dettol or whatever antiseptic solution. Is that a good way? And why is it so important to have a dry catheter? Dr. Soumya Iyer is a urologist practicing in Rajkot. Soumya, could you answer that? The correct way to store a catheter? And also, can I dip it in water? Can I reuse? Is it necessary that I use a new catheter every time? Friends, many of these questions have already been answered in a very nice talk given by Dr. Sujit. However, I see that people joined in late and questions are coming from different people. Over to you, Soumya. Yes, good afternoon, everyone. So basically, catheters can be of 2 types, as Dr. Sujit had previously mentioned. एक होते हैं जो disposable type होते हैं, जो आप daily once a time use करके use and throw जैसे, और कुछ वो होते हैं जो आप reusable होते हैं, जो आप बार-बार use कर सकते हैं. तो अगर आप disposable वाला use कर रहे हैं तो आप once a time use करके उसको discard कर सकते हैं. पर अगर आप reusable वाला use कर रहे हैं तो generally advisable होता है कि एक catheter patient at the most 1 week use कर सकता है maximum, या तो patient at the most around 15 to 20 times वो catheter use कर सकता है. उससे ज्यादा use करना recommended नहीं होता है कि उनमें infections के chances फिर बढ़ सकते हैं.
तो generally talking about a catheter, taking the same thing forward, there is a patient of multiple sclerosis who has an indwelling catheter. It is fitted to a bag और ब्लैडर के बेस में डेब्री जमा हो रही है, बार बार कैथेटर ब्लॉक हो रहा है और कैथेटर के बाजू से लीकेज है. तो मैं पेशेंट हूँ जो मैं कैथेटर भी यूज कर रही हूँ, डायपर भी यूज करना पड़ रहा है क्योंकि डायपर में भी लीकेज हो रहा है. हाउ डू आई हैंडल दैट? इज देयर अ सॉल्यूशन? तो इस सिचुएशन के लिए बेसिकली जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि हम पर यूरेथ्रल जो कैथेटर रखते हैं, इंडवेलिंग कैथेटर, उससे अच्छा है कि पेशेंट सीआईसी कर पाए, और अगर वो सीआईसी नहीं कर पा रहा है तो हम एक सुप्राप्यूबिक कैथेटर डालें जो हम डायरेक्ट पेट से उसके ब्लैडर में डालेंगे, जिससे उसके नीचे का जो पोर्शन है वो प्रिजर्व रहता है, जो यूरेथ्रा हम कहते हैं. अब जो डेब्रिस बनता है वो इसके कारण ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम से कैथेटर आपने चेंज नहीं किया है. ये भी हो सकता है कि आपका जो वाटर इनटेक है वो कम है. तो हम पेशेंट को यही एडवाइस करेंगे कि जो कैथेटर है, अगर वो लेटेक्स टाइप का कैथेटर यूज कर रहे हैं तो कम से कम 15 से 21 दिन में चेंज किया करें, और अगर सिलिकॉन कैथेटर यूज कर रहे हैं तो कम से कम वो 6 हफ्ता रख सकते हैं वो कैथेटर. और वाटर इनटेक, जैसे नीरज सर ने पहले ही डिस्कस किया है कि वाटर इनटेक जितना पेशेंट का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है, पेशेंट का जो लिविंग एनवायरनमेंट है, उस पर डिपेंड करेगा. कुछ पेशेंट के लिए 1.5 लीटर पानी काफी है, तो कुछ पेशेंट के लिए 5 लीटर पानी भी कम पड़ेगा. और एक बहुत ही इजी टेक्निक है जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि पानी इंटेक सही है कि नहीं, कि अपना यूरिन का कलर देख के. द यूरिन शुड बी लाइट येलो, हल्का पीला होना चाहिए. अगर तुम्हारा पेशाब सफेद है उसका मतलब आप ज्यादा पानी पी रहे हैं. आपका पेशाब बहुत ही डार्क येलो है मतलब आप कम पानी पी रहे हैं. एक हल्का पीला टिंज होना चाहिए पेशाब में, मतलब आप सही पानी पी रहे हैं आपके बॉडी के हिसाब से. That's a very lovely suggestion indeed. Dr. Neeraj, there is a question. मुझे फ्लोमेट्री करने के लिए बताया है. फ्लोमेट्री के लिए मुझे रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि मैं 150 ml स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ. At any given time, my bladder can only hold maybe 100 milliliters. And so I cannot do a flowmetry. Is it necessary that everybody has to be having 150 ml in the bladder? Or does this requirement become a little lax for people who cannot store more urine? Neeraj. ये जो अमाउंट है 150 ml, दिस इज नॉट अ सेट परसेंट, या ये निश्चित नहीं है कि जी 150 ही हो तो ही हम जो है वो यूरोफ्लोमेट्री कर सकते हैं. आइडियली 150 पे दिस शोज कि जी ब्लैडर जो है वो ठीक से भरा है, उसमें एडिक्वेट पावर है कि जिस समय सेंसेशन है, बाकी सारी चीजें भी देखते हैं. बट अगर आपका ब्लैडर कम है तो आप कम में भी कर सकते हैं. वी एक्सेप्ट इवन लेस देन 100 ml और 90 to 100 ml ऑल्सो यूरिन इज सफिशिएंट. उसके बाद में उसका पैटर्न देखा जाता है कि जी पैटर्न ठीक है या नहीं है. 90 ml यूरिन है और अगर आप सिर्फ ड्रिबलिंग हो रही है या बूंद बूंद करके पेशाब आ रही है तो आपका यूरोफ्लोमेट्री आएगा ही नहीं. तो इसलिए ये जरूरी है कि जी उसका पैटर्न भी देखें. बट ये 150 ml जरूरी नहीं है कि 150 ml के नीचे जो है वो हम यूरोफ्लोमेट्री नहीं अटेम्प्ट करेंगे. Well said, because multiple sclerosis के पेशेंट्स बहुत बार ज्यादा पेशाब नहीं रोक पाते हैं और उनके ब्लैडर की कैपेसिटी ही कम है, तो उन्हें जब भी पेशाब की शंका होती है तभी राइट समय है उनका फ्लो मेजर करने का. जिनकी पेशाब की थैली सही स्टोर कर पा रही है उनके लिए हमारे टेक्स्ट बुक में ये 150 ml डिस्क्राइब किया गया है, नॉट फॉर पीपल हु हैव अ स्मॉल ब्लैडर. सो एज अ यूरोलॉजिस्ट वी टेक दैट इनटू अकाउंट. There is no hard and fast rule. Okay, I'm going to switch to some of the speakers who gave such lovely talks because I thought they could also answer some of these questions. So first question to Dr. Shruti. Dr. Shruti, मुझे बार-बार infections हो रहे हैं. Can I take a tablet as a preventive measure? Do I have to be on antibiotics all the time? And can I take medicines like Cital? How does Cital help? Is making my urine alkali important to prevent infections? Over to you, Shruti. So, ma'am, first thing is when we say that I am having a repeated urine infection, हमें ये पता करना है कि what exactly that means. क्या आप यूरिन के टेस्ट में बार बार आ रहा है या आपको सिम्टम्स है? बिकॉज अगर आप कैथेटर डाल रहे हैं बार बार, सीआईसी पे है और पेशेंट इज ऑन इनड्वेलिंग कैथेटर, तो कभी कभी हो सकता है कि यूरिन कल्चर रिपोर्ट में कुछ इन्फेक्शन आए, बट वो जरूरी नहीं है हर वो इन्फेक्शन को ट्रीट करना है. जब आपको यूरिन करने में बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है और यू आर हैविंग फीवर, या तो आपको कोई सिम्टम्स है कि विच शोज कि यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, सिर्फ तभी ट्रीट करना होता है.
अगर आपको कैथेटर है और इवन नहीं है तो टू प्रिवेंट इन्फेक्शन यू कैन कुछ बेसिक मेजर्स है, जैसे एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक जो हम सब ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। दूसरा है सम पीपल से कि विटामिन सी के प्रोडक्ट ज्यादा लेने से भी इन्फेक्शन कम हो सकता है। कैथेटर केयर ये बहुत जरूरी है, किस तरीके से का कैथेटर आप क्लीन रखते हो, कैसे रखते हो, ये चीजें जरूरी है। सिटैल जो है वो आपके यूरिन को अल्कलाइज कर देता है, एंड इट डज नॉट पर्टिकुलरली प्रिवेंट यूरिन इन्फेक्शन। ऐसा एग्जैक्टली कुछ नहीं है, बट हैविंग सेड दैट जब ये पेशेंट्स को कुछ पेशेंट्स को बार बार इन्फेक्शन होता है, कोई मेडिकेशंस है जो हम रखते हैं पेशेंट्स को लंबे समय के लिए, ताकि उनको एक रेकरेंट यूटीआई करके टर्म होता है, मतलब पेशेंट को 2 बार से ज्यादा हो रहा है इन्फेक्शन इन अ पीरियड ऑफ 6 months, तो इन पेशेंट को हम कुछ टैबलेट्स पे रखते हैं ताकि बार बार ना हो। Well said, Shruti. In fact, keeping patients on antibiotic is the last resort, which we as urologists will take to, and we will look at all the other aspects regarding correct toilet habits, keeping your body clean, ensuring timely diaper change in case you are using a diaper, or correct catheter care if you are using intermittent catheter. Somebody अगर बार बार infection हो रहा है और आप intermittent cath use कर रहे हो, तो ऐसे patient में best रहेगा कि आप हर बार नया catheter use करें और avoid reusing the catheter. Also lubrication बहुत जरूरी है। कभी कभी MS के पेशेंट में पेशाब के रास्ते के सेंसेशंस इतने शायद अच्छे ना हो, तो कैथेटर का फ्रिक्शन के साथ अंदर जाना और बाहर आना भी अच्छी बात नहीं है। So that is something very important. A question to Dr. Nikhil. Incontinence बार बार हो रहा है. Now this has been explained very beautifully by Dr. Sujit in his talk, but I am simply asking Dr. Nikhil to elaborate a little more. कुछ दवाइयां हैं जो मैं सिर्फ लीकेज के लिए ले सकता हूं या ले सकती हूं? ओवर टू यू डॉक्टर निखिल। यस मैम, अगर इनकॉन्टिनेंस बार बार हो रहा है और बाकी सारे मेजर्स ठीक से कर रहे हैं, जैसे कि टाइम्ड वॉइडिंग या बिहेवियरल पानी का इनटेक रेगुलेट करना, कैफीन इनटेक रेगुलेट करना, इस सब के बाद भी अगर लीकेज हो रहा है, एंड इफ वी नो, अब दो चीजें हैं हमारी जानने की ऐसे केस में कि ये अंडर एक्टिव ब्लैडर की वजह से लीकेज हो रहा है या ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से लीकेज हो रहा है। अगर अंडर एक्टिव ब्लैडर की वजह से लीकेज हो रहा है तो ब्लैडर फुल होगा और ये ओवरफ्लो की तरह का लीकेज होगा। ऐसे में ट्रीटमेंट फिर CIC पे आना पड़ेगा, कोई दवाइयां काम नहीं करेंगी। और अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से लीकेज हो रहा है तो फिर उसमें ब्लैडर रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं। जैसा डॉक्टर सुजीत ने बताया था, 2 क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं जिनको ब्लैडर सिडेटिव्स बोलते हैं, एंटी मस्करेनिक्स भी इनको बोलते हैं, सॉलिफेनासिन, डेरिफेनासिन, टोल्टरॉइडिन, ऑक्सीब्यूटिनिन, इस तरीके की ड्रग्स हैं जो कि हम लोग धीरे धीरे उसकी डोज को टाइट्रेट करते हुए देते हैं, इफेक्ट को साथ में ध्यान में रखते हुए। इससे थोड़ा सा ये और होता है, ब्लैडर को तो ये सिडेट करती हैं लेकिन साथ साथ कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देती हैं। और किसी लोगों में जिनमें आई का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसको ग्लोकोमा बोलते हैं या काला मोतिया बोलते हैं, तो इफ somebody is suffering with one of those, तो उसको भी वो फर्क करती हैं। और खास तौर से ओल्ड एज पेशेंट्स में इनमें से कई सारी ड्रग्स जो हैं ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती हैं और लॉन्ग टर्म लेने पे फिर उनकी कॉग्निटिव फंक्शंस वो भी अफेक्ट होने लग जाते हैं। तो उनको कॉशियसली देना चाहिए, जितना कम से कम हो सके, जो कुछ भी फ्लूइड मैनेजमेंट से और बाकी चीज़ों से मैनेज हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा। दवाइयों को जितना कम से कम देने की ज़रूरत पड़े उतना अच्छा। Very, very true, really. Depends on the reason behind the urinary leak. Appropriate medication or technique of self-catheterization can be used, and correct medication to avoid constipation is very essential, especially for MS patients. Dr. Sujit, there was a question regarding, is there a video available to show the technique of self-catheterization in a female? Now, I'm sure there are videos available online, but Dr. Sujit, I would request you to share your slides again, because you had some very nice simple line drawings where you showed the technique of catheterization both in a male and a female. So can we quickly have your presentation where you will directly go to your slides showing specifically the technique of self-catheterization? And while you are doing that, I'm just going to direct the next question to Dr. Nasreen, who will answer that after Sujit has already finished answering this question. So Nasreen, the question to you would be correct management of constipation.
Give a thought to that, because people want to know the correct diet. They want to know the correct laxative. They want to know, is it essential to use only enema, or is there an option to that? But first, over to Sujit regarding the technique of clean intermittent self-catheterization. Yes, Sujit. Yes, thank you, ma'am. To begin the technique of self-intermittent catheterization, the first thing is to have a clean environment, and then the things needed for catheterization includes a catheter, a lubricant, and a method to empty the urine and the clean environment. And the first step is to wash your hands with soap and water. You know, to use some betadine or those things, it's not needed. You can, for the soap, what you can use is a liquid soap dispensers are available of any brand. That will be an ideal thing than using a piece of soap, because it is little more closed thing. So you can use that soap and water to clean your hands and then dry your hands. And then the next step is to wash the genital area for males and females. So this type of showers can be used for this purpose. Then after washing the genital area, it's important to lubricate the tip of the catheter, the inserting part of the catheter. That tip should be adequately lubricated. And once you have lubricated and selected the suitable size catheter, maybe 10 or 12 French catheter, then you should insert it gently. While inserting the catheter, the care should be taken not to avoid trauma. Once you are inserting it gently, there is a low chance of having trauma. And once you have passed the catheter, the urine will start coming. And once you have emptied the urine, you can slightly adjust the position of the catheter so that some residual urine, which was below the level of the eye of your catheter, can also drain, and to ensure that the catheter is completely, bladder is completely drained. You have drained the urine. Then you should remove the catheter slowly, and after remove the catheter, you should clean your area, both males and female. Then before storing the catheter, you should clean the catheter with again with the soap and water. And once after cleaning, you should store the catheter the way, preferably in the dry technique. Perfect. Perfect. Thank you so much. Can you stop sharing your screen, Nikhil? Sorry, Sujit. Yes. Lovely. So we go over to Dr. Nasreen, and I had already given her the question. Nasreen, this is pertaining to the correct way of managing bowels, dietary-wise. There are questions regarding the correct laxative. There are questions which are asking you, can I or do I have to take an enema every day? Maybe can I use a suppository? Then somebody is asked that 4 दिन में मुझे motion नहीं आ रहा है, बन ही नहीं रहा है motion, I am very uncomfortable. How can I manage all of these? So Nasreen, can you briefly answer these? Yes, ma'am. What I would say is it's always better to prevent rather than to treat. So it's better that we inculcate good lifestyle in our daily routine. So like taking adequate fluid, rightly said before. Adequate fluid means it should balance between the leakage and the constipation. High fiber diet, especially green leafy vegetable like spinach. It's very good in preventing the constipation. Avoid taking dairy products like especially this pav और जो bread होता है, अगर आपको लेना ही है तो try taking brown bread rather than normal white bread. So these are the small things, you know, which can prevent the constipation. और रहा सवाल तो अगर कॉन्स्टिपेशन है आपको और आप हैबिचुएटेड हो तो बिफोर इट्स टू लेट, लाइक 4 दिन से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, सो इट्स आई थिंक प्रोबेबली इट्स नाउ टू लेट फॉर इजीली मैनेजिंग द कॉन्स्टिपेशन. तो अगर आपको पता है आपको 1 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, then start take the laxative. तो multiple laxatives available है. There is no specific laxative which is preferred by us. तो जो भी सूट करता है, जैसे डूफलेक जो कि लैक्टुलोज है, डूफलेक अवेलेबल है, क्रिमैफिन अवेलेबल है. किसी पेशेंट को एक सूट करता है, किसी पेशेंट को दूसरा सूट करता है. देन देयर आर डायबिटीज अगर आपको है तो आपको वो शुगर फ्री लेना होगा. और दूसरा और एक है जो सॉफ्टोवैक, एक ब्रांड होता है, जो ब्रांड राइस ब्रांड होता है,
बट आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप सॉफ्ट वैक ले रहे हो तो उसको पानी में डुबा कर रखें और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी ले लें, क्योंकि ये हाई फाइबर होता है, और अगर उसमें आपने पानी कम पिया तो और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन करेगा। सो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। अगर आप कोई मेडिसिन ले भी रहे हो, देयर इज नो प्रेफरेंस ऑफ वन लैक्सेटिव ओवर अदर्स। रहा सवाल इनिमा को, तो इनिमा आपको एवरीडे नेसेसरी नहीं है। अगर वंस इन अ वाइल आपको कॉन्स्टिपेशन इतना सीवियर हो गया है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 4 दिन से नहीं हुआ, तो शायद आपको इनिमा जरूरी रहेगा। एंड आई वुड say कि it is better to consult a medical person before trying any medicine yourself and not to self treat। कोई भी रहे, जैसे यूटीआई हुआ या फिर आपको लीकेज है या आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप सेल्फ ट्रीट बिल्कुल नहीं करोगे। एटलीस्ट आपको एक बार जाके डॉक्टर को दिखाकर मेडिकल एडवाइस लेकर ही, ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन नहीं लेना है। आपको मेडिकल शॉप में जाके भाई हमको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, कोई मेडिसिन मत ट्राई कीजिए। लेट अ डॉक्टर एडवाइस एंड देन ओनली डू इट। Very wise words. Beyond a limit, one should not self-treat, and experts are available. In fact, which is the purpose of this webinar? हम सही जानकारी आप तक पहुंचा सके, because we are all, well, I wouldn't call ourselves experts, but we are all people who are adequately trained with the necessary information to deal with all the problems that you people have described. तो हम कुछ तो सलाह जरूर दे सकते हैं. 2 questions I will be asking, one to Dr. Neeraj and the next question will go to Dr. Soumya. Soumya जी, मैं आपको जो question पूछने वाली हूँ उसके बारे में आप थोड़ा सोच के रखिए. I am an MS patient. I don't have any urine trouble now. Is there some way to predict मुझे urine trouble होने वाला है? When should I consult a urologist? MS के कारण maybe my eyesight is having little issues. मुझे चलने में थोड़ी तकलीफ है, पेशाब की अब तक कोई शिकायत है नहीं. किस तरह से मैं खुद को मॉनिटर करूं ताकि सिवियर यूरिनरी प्रॉब्लम होने से मैं बच सकूं? नीरज, there is a question to you. Yes. I am suffering from urinary bladder issues. मेरा MS mild है. Can this urinary bladder issue lead to kidney failure? MS के पेशेंट्स में सिवियर यूरिनरी तकलीफ हो सकती है या नहीं? Over to you, नीरज. MS के पेशेंट्स में यूरिनरी और बाउल दोनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा कॉमन है, और ये देखा गया है कि कुछ समय के बाद में 50 to 60% या उससे ज्यादा लोगों को ब्लैडर की परेशानी हो सकती है. कितनी परेशानी होती है ये इंडिविजुअल पेशेंट्स की, उनकी साइट ऑफ डिजीज कहाँ पे है, उनको परेशानी स्पाइन में, उससे रिलेटेड है. बट हमें ये ध्यान रखना है कि जी द MS पेशेंट्स आर लाइकली टू सफर फ्रॉम यूरिनरी प्रॉब्लम्स. नाउ which type of problem do we have, as has been elucidated earlier कि जी हो सकता है कि हमारे पेशाब नहीं निकल पा रही हो, that is अकॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर, और हमें ज्यादा इशू आ रहा हो कि जी पेशाब जो है वो जल्दी जल्दी निकल जा रहा है, इनकॉन्टिनेंस इश्यूज. दीज आर 2 वेरिएबल फीचर्स. एक ही पेशेंट में ये कई बार अलग अलग चीजें का प्रेजेंटेशन हो सकता है, इसलिए ये नहीं जरूरी है कि जी इनकॉन्टिनेंसी हो जी या अकॉन्ट्रैक्टाइल हो रहा. इसलिए हमें बहुत ही ध्यान रखना है दैट हम अपनी परेशानी को देखें और जो परेशानी उस समय हो रही है उसका ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए एडिक्वेट ट्रीटमेंट और ओपिनियन लेके ट्रीटमेंट करें. सही बात है. The thing about multiple sclerosis, and that is for all of us to remember, is it affects the lower urinary tract in a manner which is likely to impact quality of life, but almost never one will get a kidney failure or require a transplant as a result of multiple sclerosis. People are extremely worried, and worry is the first reason they run to the doctor. मुझे बार-बार infection हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरी kidney fail हो जाएगी क्या? As a rule, MS tends to affect the lower urinary tract in a manner which is not severely impacting the kidneys. So I want people to remember that. Of course, medicine is not mathematics, and there will be patients of MS who can develop kidney damage. But usually problems tend to be lower urinary tract, and as Dr. Neeraj has clearly explained, provided you follow correct practices, they are amenable to whatever technique that you use to either hold or empty your urine. Dr. Neeraj, can yoga help me? योगा जो है वो इस बीमारी में काफी मदद कर सकता है. हमें ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज नॉट ओनली अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो अ मेंटल स्ट्रेस. और ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो डिप्रेशन और बाकी चीजों के भी शिकार होते हैं.
Yoga can be helpful in both of these things to control the problem of multiple sclerosis as well as overall acceptance of the disease, as well as making our mindset into changing circumstances. जहां तक योगा की into the neurological problem जरूरी है, वो ये कि योगा जो है हेल्प करता है हमारा बायोफीडबैक मैकेनिज्म में। और जैसे कि हमने अभी देखा भी था कि जी अगर हमें पता चलता है कि हमारा ब्लैडर किस समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हम देख सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, तो शायद हम बेटर कंट्रोल कर पाए अपनी बीमारियों को। तो योगा वुड बी डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल इन ओवरऑल एस्पेक्ट्स as well as a mental calm as well as in the disease process. And ये आदमी को अपने अपने हिसाब से ही इसको देख के करना चाहिए, but definitely this is one of the mainstay of treatment because multiple sclerosis एक डिप्रेशन और इसका भी जो है कंपोनेंट काफी ज्यादा है परेशानी और उसके निवारण में. So as Dr. Neeraj has very rightly said, yoga is a way of life and it impacts multiple sclerosis patients it helps multiple sclerosis patients in so many different ways, not only physically, but emotionally, spiritually, and psychologically also. So it is a good practice for MS patients to adopt yoga as a way of life. And of course, bowel में जरूर help करता है, pelvic floor strengthen हो सकता है, और motion में, by improving your quality of life, motions will also be eased. Dr. Soumya, मैंने specifically आपको पूछा है कि how can I predict? Am I going to need a urological help? Will I do 2-3 years down the road develop a urinary problem? How can I be proactive about it? Yes, Soumya. Yes, ma'am. तो जैसे कि डॉक्टर निखिल ने हमने पहले ही बताया था कि up to 3/4 of those patients with multiple sclerosis may have involvement of their lower urinary tract. Soumya, may I just interrupt you for a minute? Just give me 1 minute. Dr. Sujit, I'm going to ask you the question after Soumya. There is a question specifically asking for answer in English. I am 31, I'm bachelor, I'm a patient of MS, and I'm looking at getting married. And is MS likely to impact my sexual life? So think about the answer for that. Soumya, sorry for that. Over to you. Yes. Yes, so as I was saying, we previously discussed with Dr. Nikhil also that up to 3/4 of these patients will have lower urinary tract symptoms. तो हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है कि हम प्रिडिक्ट कर पाए कि whether this patient is definitely going to get the symptoms or not. पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है the patient needs to be aware कि क्या symptoms हो सकते हैं. अगर पेशेंट को खुद पता रहेगा कि हाँ मुझे ये सिम्टम है, मतलब मुझे मेरे डॉक्टर के पास जाना है, तो it will be easier for him to get treated and to get diagnosed as well. So the patient अपने तरफ से proactively every 6 months or maybe annually he can go and show to a urologist कि how he is going about. The urologist can check कि patient में भी asymptomatic, उन्हें symptom कुछ ना हो, पर patient के अंदर यूरिन भरा रह रहा है, यूरिन completely empty नहीं हो रहा है, और patient को लग रहा है कि नहीं मेरा सब सही चल रहा है, तो 6 monthly या डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कहाँ रह रहा है वो अपना विजिट कर सकता है यूरोलॉजिस्ट के साथ. एट द सेम टाइम वो घर पे भी कुछ छोटी चीजें हैं वो जो ध्यान रख सकता है, जैसे कि अपना वाटर इंटेक सही रखे, अपना लोकल हाइजीन मेंटेन करके रखे, और अगर पेशेंट जैसे कॉन्स्टिपेशन का भी यूरिन इन्फेक्शन या यूरिनरी सिम्टम्स के साथ रिलेशन है, तो पेशेंट कैन ट्राई टू प्रिवेंट गेटिंग कॉन्स्टिपेटेड. वो उसके लिए अपनी दवाइयाँ या जो भी वाटर इंटेक है या जो भी रेशे वाले खुराक होते हैं, जैसे पपाया है, बनाना है, सैलेड्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वो इंटेक वो एडिक्वेट रख सकता है अपना. तो ये छोटी चीजें हैं जो वो अपने आप से कर सकता है, पर सेल्फ अवेयरनेस अगर पेशेंट को है तो वो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस का है. तो वो अपने आप से ही every 6 monthly या डिपेंडिंग अपॉन वो जहाँ है he can consult a urologist because prevention is definitely better than cure. Very true. So 2 aspects that Dr. Shruti has highlighted, since she's answered mainly in Hindi, and I've realized few people are requesting English. So the 2 points that she's highlighted, one is to first get yourself checked up. Not just to know if you have any issues related to the bladder, but to know what can go wrong so that you become an aware patient. And then you may think that you have no complaints, but some of the simple tests that a urologist does, such as a sonography, may show कि भाई सचमुच issues है, आप महसूस नहीं कर पा रहे हो. So both ways, I think one visit to a urologist as a baseline visit is a good idea. Over to Dr. Sujit, but before you start, Sujit, Dr. Shruti, I'm going to ask you a question. So I am 28 and I have significant disability because of multiple sclerosis.
I have slightly irregular periods. I am married. I want to get pregnant. Is pregnancy an issue? And is a normal pregnancy and safe delivery possible for an MS female patient? Over to you, Sujit, for the first question that I asked you. Yes. Okay, ma'am. Actually, already we have told that this multiple sclerosis is a disease that affects the quality of life. So, like any other urological problems, like the problems associated with multiple sclerosis, like incontinence, increased frequency, all this can have an impact on your sexual life. So, but if you tackle these symptoms, then you can make your life in such a way that it may not affect the sexual life to a much extent level. Like you can adopt measures like passing your urine before a sexual activity. All those lifestyle changes, if you make, you can have some changes in the thing. And other thing about the fertility issue, multiple sclerosis will not lead to any fertility issues as such. Sujit, does multiple sclerosis impact a patient's ability to have a satisfactory erection? Multiple sclerosis associated with the other normal lifestyle diseases, like if they have diabetes, all those things, they can have some impact on the quality of the erection. But there are medical solutions for that. To take the timely advice from the urologist can help him have a normal sexual life. So multiple sclerosis as a rule doesn't impact the ejaculation or ability to have sex so much as what it impacts the urinary tract. So I think that was also what this person wanted to know. Now, before you start answering the question, Shruti, the next question is going to go to Dr. Nikhil. Nikhil, my mother is 56. She's been a patient of multiple sclerosis and I am 24. I'm normal. I'm worried that I will get MS. Is it genetically transmitted? My mother's urinary quality of life is severely impacted, and I am so worried that I'm developing all sorts of wrong urinary protective obsessive behavior. Just throw some light on whether I will get it just because my mother has it. Shruti, over to you. So first thing we have to understand is that multiple sclerosis does not affect the probability or chances of getting pregnant. The multiple sclerosis does not affect pregnancy, does not affect fertility. You can get pregnant, you are fertile, and it does not actually, the disease per se does not alter your fertility. So having said that, you can get pregnant, yes. There are, however, and being pregnant, a lady with multiple sclerosis, when she does get pregnant, there is no flare up or something like that which happens of the disease. That is number two. But then there are few problems that may arise in few patients. One is these women may have difficulty in doing a normal labor simply because their muscle strength is not there to have a normal delivery. That may be an issue in some women. Other is some patients may have a smaller child, smaller for the what is described. And second is definitely prevention of urinary tract infection becomes very vital in pregnant women, because urinary tract infection is known to cause some complications in pregnancy. But having said that, any patient with multiple sclerosis can get pregnant in a natural way. The disease does not affect fertility. So Dr. Shruti, I am self-catheterizing and I am pregnant. Do I have to make any changes in my catheterization schedule? Do I have to stop catheterizing and maybe opt for an indwelling catheter? Is it safe for me to carry on self-catheterization throughout my pregnancy? So provided the precautions and the cleanliness and catheter care and good catheter care is maintained, it is safe to continue clean intermittent catheterization throughout pregnancy. And it is in fact a better option as compared to an indwelling catheter. Perfect. Before Nikhil starts answering, there is a question by one Mr. Hitesh Patel. Patel સાહેબ, તમે જો ગુજરાતી બોલો છો તો મારી સજેશન છે તમને, તમારા ઘણા બધા જો ક્વેશ્ચન છે તમે કોઈ એન્ડ્રોલોજિસ્ટને કન્સલ્ટ કરો, so that તમે one to one dialogue કરી શકો અને તમારા બધા ક્વેશ્ચન્સને આન્સર ડાયરેક્ટલી તમારી લેંગ્વેજમાં મળી શકશે, કેમ કે આ ફોરમમાં કદાચિત તમારા ક્વેશ્ચન્સ માટે આપણે સેટિસ્ફેક્ટરી આન્સર નથી આપી શકતા. आपके जो सवाल है वो आप कोई एंड्रोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करिए ताकि आप वन टू वन कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन कर सके. हर एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन जरूर रहता है
और कोई अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करिए. Over to you, Nikhil, regarding the hereditary behavior, if at all, in MS patients. And is it necessary that if I do get MS, I must get bladder symptoms? Sorry. So regarding inherited nature of MS, there is no clear-cut inheritance pattern, although familial multiple sclerosis is a known entity. कि ये जरूर देखा जाता है कि जिनको MS है उनमें उनके रिलेटिव्स में 15-20% ज्यादा चांस होता है उनको MS होने का. बट क्लियर कट कोई इनहेरिटेंस हो ऐसा अभी तक तो मुझे नहीं पता, शायद और देखूं तो मुझे पता पड़े. बट डायरेक्ट मदर को MS है तो आपको MS होगा ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है. Yeah, in fact, MS is not hereditary. Yes, go ahead. एंड अगर MS है तो क्या यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे ही होंगे. दिस ऑल्सो नॉट नेसेसरी. एज आई सेड 25% पेशेंट्स डू नॉट हैव सिम्टम्स एंड देन 75% ऑफ दोज हु डेवलप, ये जरूरी नहीं है कि उन सबको इतना सीवियर कैटेगरी के सिम्टम्स हो. मे बी कभी कभी माइल्ड सिम्टम्स होंगे जो सिर्फ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से मैनेज हो जाए. Very true. Dr. Nasreen, now this has been answered repeatedly by various people, but maybe some people have joined the webinar late. तो मैं 4 साल से MS के patient हूँ. No, not 4 साल, sorry, 22 years. And since last 4 years, मुझे catheter की जरूरत है. Is self-catheterization the only solution? Can anything else be done? I think we've answered this, but maybe go over all the options available for somebody who necessarily requires some help for emptying her bladder. Over to you, Nasreen. Yes, ma'am. So, like it is said that अगर पोस्ट वाइड रेसिड्यू डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि आपको सेल्फ कैथेटराइजेशन करना है या आपको वो यूरिन जो जमा रहता है वो ड्रेन करना है, तो वो ड्रेन करना बेहतर है वो किसी भी फॉर्म में. देयर आर अदर ऑप्शंस, लाइक एक तो है सेल्फ कैथेटराइजेशन विच इज गिवन अ चॉइस. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इसमें आप बाकी टाइम फ्री ऑफ कैथेटर रहते हो. कैथेटर के अपने खुद के जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं. और तो गिवन अ चॉइस, इफ आई हैव मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड गिवन अ चॉइस, सेल्फ कैथेटराइजेशन वुड बी माय फर्स्ट चॉइस. तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है जो इनवेलिंग कैथेटर है, जिसमें हम पर यूरेथ्रल कैथेटर डाल सकते हैं. अगेन उसके भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि वहां से इन्फेक्शंस होने के चांसेस स्पेशली मेल्स में ज्यादा होते हैं. तो थर्ड ऑप्शन जो रहता है वो सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, जहां पे आपको पेट में से एक छोटा सा होल करके वहां पे कैथेटर डाल दिया जाता है और वो कैथेटर भी अगेन एंड अगेन चेंज कर सकते हैं. तो दीज आर द 3 ऑप्शंस which are there to empty your bladder completely if you are keeping high post void residue या पेशाब आपका निकल नहीं रहा है तो. Yeah, so Nasreen, that is very well said, but in just 2-3 lines, say all of this in English, because we are switching to Hindi, even though many of us are not comfortable with Hindi, simply with the belief that most people are conversant with Hindi, but it does look like some people specifically want us to answer in English. So everything that you said in a concise manner, just say that in English. Okay, so like it is said before, there are multiple options to take out the urine which is remaining inside the bladder. I mean, some patient might be able to pass half of the urine, some patient may not be able to pass any of the urine. So there are options available. One is self catheterization, clean intermittent self catheterization, where we catheterize at the frequent interval of say 4 hours, 6 hours, some people 4 hours, some people 6 hours, depending upon your volume output. So self catheterization is the best option given a choice. Another option is indwelling catheter, where the Foley catheter or the urinary catheter is kept inside the bladder from the urinary route, normal urinary route. But again, that option has some other issues like repeated urinary infections. So the third option is suprapubic catheterization, where the catheter is put from the abdomen, from the lower part of the abdomen, and that catheter remains there. So these are the 3 options available.
Thank you so much, Nasreen. Dr. Neeraj, I'm going to be asking you the next question. Then I'm going to say something about a comment while you think about an answer for the question. So is a multiple sclerosis patient more likely to develop kidney stones? And is there some way that I, as a patient of multiple sclerosis, can prevent development of a kidney stone? While he's thinking of an answer for this, there are a few questions referring to hereditary pattern of MS. Now, we are a team of urologists. All of us are qualified in dealing with urinary impact of multiple sclerosis. And none of us, and I repeat, none of us are experts in telling you about the disease behavior pattern from a neurological point of view. So the common sense tells us, and our limited knowledge tells us, that neurologically, MS is not hereditary. If both father and mother have MS, will I get MS? A simple urological answer to that is please check with your primary treating neurophysician, because we are clearly not the right team to address that. But perhaps no, because MS distinctly does not have a hereditary pattern. But I would leave that at the moment because we're not the right people to answer that. There is an unusual urinary odor as a symptom. Do I need to consult the doctor? No, urinary odor is a result of multiple factors. You could have concentrated urine, inadequate liquid intake. Sometimes some of the food items give an odor to urine. Some of the vitamin supplements can give odor to urine. So all of these can impact the urinary odor, but odor itself doesn't necessarily mean a disease. Over to you, Dr. Neeraj, kidney stones and multiple sclerosis. And I think we will be winding up after this, after Dr. Neeraj's answer. Yes, Dr. Neeraj. See, we all are staying in areas which are very prone to kidney stones. So India is supposedly a kidney stone belt. So kidney stones can be unrelated to multiple sclerosis also. The patient may be having a kidney stone development because unrelated to multiple sclerosis. That is a separate issue. Now, what we are discussing here is, can multiple sclerosis lead on to kidney stones? There is a situation called high pressure bladders. जिस समय की जी, if there is a high pressure bladder and there is a reflux of urine into the kidney, these patients are more likely to have kidney stones and kidney failure. Secondly, these high pressure bladder stones can symptoms can lead on to UTIs, which can be a predisposing factor for kidney stones. So yes, definitely, per se, multiple sclerosis patients are high prone to develop kidney stones more than the normal population. But as we had discussed earlier, multiple sclerosis is basically more of a lower tract disease. And so upper tract kidney stones are less likely in general, but more likely than the normal patients. But we have to be the caveat is we have to be very careful that all of us are living in a kidney stone area, climatic conditions, and de novo kidney stone formation may be present unrelated to multiple sclerosis. Very well answered. So an MS patient is as likely to get kidney stones as somebody else if there is any other reason for developing kidney stones. UTIs being more common, certain types of stones may be more common in MS patients. One last question to Dr. Soumya. Dr. Soumya, my patient's symptoms are present for a few months during the year. She suffers from urinary incontinence and she feels there is a climactic change in that. There are times that her symptoms are worse. There are times that her symptoms are absolutely quiet. Is it simply related to waxing and waning pattern of MS as a disease, which all of us know? Or is it that the climatic condition also have an impact on MS? Answer it in 2 languages and then we will call it a day. Yeah. Yes, Soumya. So this could be both. This could be because of both the things. It could either be because of the waxing and waning pattern, but however, that is not seen very frequently or during the year. Like it is usually a long-term thing. And at the same time, it is more likely that it might be because of the climate also. Sometimes in the summers, we tend to get more dehydrated or we are not drinking adequate water. Or sometimes in the winter, because it is so chilly, we often get, even a normal person will normally get increased sensation of voiding during the winters. So these people might get affected also because of the climate. तो ये दोनों चीजों के वजह से हो सकता है, पर ज्यादातर
ज्यादातर यही बात है कि क्लाइमेट की वजह से हो सकता है कि समर के टाइम गर्मी ज्यादा है, हम पानी कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसके कारण भी तकलीफ बढ़ सकती है। या विंटर में क्योंकि इतनी ठंड है और एक आम इंसान को भी बार बार पेशाब जाने का सेंसेशन आ सकता है, तो इन पेशेंट्स को भी आ सकता है। तो इट कुड बी दोनों चीजों के कारण हो सकता है ये चीज। Thank you so much, Soumya. So, friends, if I were to summarize in the end, we've just learned through various talks given by experts that MS can impact so many different aspects of urinary tract, but there is a solution for each of these. We have in our own way tried our best to answer all the queries, and the three speakers who presented their slides very, very beautifully elucidated every point about how MS impacts the urinary tract and what can be done about both diagnosing it and managing it, both in the short term and in the long term. The questions were very nice because they did make us think. Some of the questions we actually discussed on our groups, like holding capacity of a diaper, and what if I don't pass motion for 5 days? And a lot of these questions made us think. So thank you so much. MS doesn't irreversibly damage the urinary tract, but if it does, we are there to help you. Thank you so much. In the end, I wish to thank, first of all my speakers and the panelists for giving full justice to the topic that they were given, showing beautiful slides with lovely animations and line drawings and crystal clear messages. And to all the three panelists for patiently answering questions in both Hindi and in English. And Sujit, specifically thank you to you because you answered some of the very difficult questions, and your slides regarding self-catheterization were indeed very, very beautifully made. I wish to thank Team IPCA, Suruchi, and all the team members of IPCA. IPCA as a company has always been very proactive in any kind of public education and awareness initiative. And thank you so much, Suruchi, for holding our hand in this venture. I wish to thank Dr. Sanjay Sinha for creating this committee, and all of us are very passionate about public education and awareness, and we hope to carry on this effort at least in the next 2 years under various headings so that we reach out to population at large who needs this activity the most. Last but not the least, Sheila Tai, the president and the chairperson of Multiple Sclerosis Society, for agreeing to be our partner in this webinar and for letting so many patients access to this webinar. And I sincerely hope our effort has been up to the mark. Sheila Tai, if you wish to make a few comments, over to you. Yes, thank you very much to the whole team. It was wonderful talk, and it was so many solutions which we never knew. Thank you so much. And we would like to be associated with your whole team once again whenever it is possible. Please do this, because I am sure that many patients may not have come today, and they would want to have this again answers and maybe something more also. So thank you so much once again, and looking forward to your support once again. Thank you so much. I also wish to thank the MS Mumbai chapter secretary Geeta, who has been involved in the planning of this entire session. I somehow didn't see her joining, or maybe I missed that because she's somewhere else, as I understand. But she's been instrumental in giving me all the email IDs of various MS chapters. So thank you again. We call it today. Thank you, everybody. Enjoy your Sunday. Bye-bye.